Those who are Sufis, Sufi means the mystics who has come out from Islamic tradition. They build bridges, and those who are sectarian, they build walls. Those who are priests, they build walls, and those who are Paramahamsas, they build bridges. So what is a wall and what is a bridge? Are we surrounded by walls, or we have access through bridges to everywhere? When we were born, we did not have any identity. When we were born, we did not have any concepts. We did not have any dogmas or principles or trends and traditions and culture and society. When we were born, we did not have any nationality. We did not have any borders. But after our birth, we were confined in so many walls surrounded. The walls created by our parents, who simply followed and remained confined in the walls created by their parents. And again, those grandparents kept them confined in the walls created by their parents and grandparents. We are simply following the footsteps of the people who have created walls for us. Now, what are these walls? I believe in particular faith, so I have created a wall, because I would not actually go into other faith, or I would not believe in other faith. I have a particular principle. If I am a Hindu, then I would believe in reincarnation. If I am a Muslim or Christian or Jewish, I would not believe in reincarnation. I will wait until the day of judgment. All these kind of walls we have created, or we have accepted from our forefathers. They simply lead us to a confinement. They narrow our existence. Not only that, we start judging other people with the windows built on those walls. All the walls, such walls are the creation of our human minds. We built those walls, and we believe that this is our house. And the priests and imams and maulvis and sannyasis and sadhus and swamis and gurus,
They only cemented these walls. So we do not cross the border. So we do not go near to the river, which is always flowing, which is changing every second. Whereas the Sufis or the Paramahamsas or the people who are realized, the mystics, those who have walked on the path of spirituality, those who understood the existence, those who have known and realized themselves, the absolute, they do not build walls. Instead, they build bridges. They do not confine themselves between the walls somebody have created. Instead, they would like to walk on those bridges. They bulldoze those walls and then they build those bridges that take them everywhere without any kind of restriction, without any kind of limitation. There is a game we used to play when we were kids, and I would say that many of you might have played that game. You are standing near the window of your house, apartment, flat, or simple house, and outside there was a road. When I was young, there was not much traffic there, but still, few cars here and there would actually pass. So you start playing a game, and when you see a car, you have to identify the color of that car, and then you have to say that red car is mine. Whoever sees the car first and claims on that car with identifying the color of the car, that blue car is mine. Whoever says the first, that car belongs to him or her. And then at some point there would be a kind of disagreement. Who said it first? And then the children, the kids would start quarreling, fighting, arguing that that car was mine, not yours. But those cars never belonged to us. They were just passing by. And we created a game of those passing cars. Likewise, all these traditions and system of beliefs and principles and dogmas which we have created because we have these passing thoughts. Thoughts are only passing through our existence. They do not belong to us. If there is a thought that says that I am a woman, or I am a man, or I am an angry person, or I am a Hindu, or a Muslim, or a Christian, or I live within these borders of this country.
And when we accept that thought, we can find ourselves. Sometimes we feel that why is such a thought, which we have labeled bad thought? Why is such a bad thought appear in my mind, in my brain, in me? And then we get depressed. That I am not a good person, or I am a greedy person, or I am an envious person, something like that. Or I am an unhappy person. On the other side, a joyous thought appears there. Then we label ourselves happy person. Or a thought of kindness appears there. So we label ourselves as kind person. Whether it's a thought of kindness or thought of cruelty, they are only passing by cars. They do not belong to us. But if we have claim on those cars, if we have claim on those thoughts, and if we start believing according to those thoughts, then we have created a world. We have confined ourselves. If we have just actually observed those thoughts, whether those thoughts can be labeled as good or bad, saintly or of sin, that does not matter. If we have just observed those thoughts, then we have built bridges without any boundaries, crossing everywhere, without any limitation. Mystics and Sufis and Paramahamsas and realized person, they build bridges. Those who are bound in between the walls, they cannot see further. And not only that, they also restrict their own existence. They cannot look beyond, they cannot experience beyond those walls of different beliefs and different dogmas and different kind of traditions and cultures and thoughts. The idea is to build a bridge. And how do we build a bridge? By not claiming on those cars, but not by not claiming on those thoughts, by not claiming onto those beliefs which were passed on to us by our forefathers, by our previous generations, by our surroundings, by the people who have confined themselves in particular dogmas and principles and traditions and cultures and societies and whatnot. If we build a bridge, then there would be no limitation. If we build a wall, then there would be no experience of the real existence. To build a bridge, we only have to observe. We only have to witness the thought. We only have to witness the existence. We do not need to participate or take a side in this existence. We have to flow with the existence, just like a river.
And when we actually flow, what happens? We always go towards the absolute. Ocean does not need any more water. Still, all rivers, they rush towards the ocean. If you make yourself free, if you just flow, then you will end up in the absolute, in the completeness. Just like rivers, they end up in the ocean full of water. By observing the thoughts, by observing the existence, by witnessing the existence, by not confining ourselves into any kind of walls, we always travel towards the completeness. And when we realize that absolute, the only one element, the only one, the absolute, whatever you can call them, whatever you want to call them, but that the only one absolute is absolutely complete. And we can only achieve that completeness, we can only merge ourselves into that completeness when we let ourselves loose, when we let ourselves flow with the flux, flow with the existence, without confining ourselves into any kind of walls. Thank you very much. Please unmute yourself and do join in the wisdom sharing. Also, please share your experience and wisdom. Thank you. Namaste, Vijay. It's a wonderful, wonderful session, Vijay. Lot of things that we have learned from today. I was wondering, what is this walls and bridges? So you have made us understand a lot of things through the examples that you have taken, and everything is, when you speak, everything seems very simple. This is it, this is it. What we wanted to listen, and this is the ultimate, what you are conveying to all of us. Thank you so much, Vijayji. And I remember in 2019, I told this experience many a times, but I would like to repeat it again here, about how there was a small interaction with Patriji in 2019 when we were in Egypt. Then there was a group of people, and they were thinking that I'll be playing the singing bowls, and Patriji invited everybody to his room, and we were all waiting, and we were waiting for his okay, now you play the singing bowls. But he never asked me to play the singing bowls, but I was very much prepared. Somewhere, as you said, in the mind, when things doesn't go according to us, the thought comes to our mind that you are not unfit, then all these things, then you think that that is reality. Then why did Sir Patriji did not recognize you, and all these doubts and all sorts of things that come. And when we walk in the path of spirituality, it doesn't take much time to just be a witness to whatever is happening in the mind, and understand that this is not the reality, that car doesn't belong to you. It's just passing, and just witness. And there, after this whole episode had done, I just went to Patriji, and when I understood what had gone through in my mind, I just went to Patriji and I told him, thank you, Patriji, for breaking my comfort zone. Then he simply said one thing that it still rings in my ears, that Madhu, I did not break your comfort zone. I want you to be comfortable in every situation. That means
any good situation comes into your life, or any not good situations come into your life, be a witness to it. Just watch it, be a witness to it. When he said that, it is it, this is it, like, and today listening from you the same thing, of how we have to witness each and everything. And we have to be really mindful of whether we are creating the walls, or we are constructing the bridges. So we have to be really mindful of it. And we should not program ourselves, and we should not program our children as well. So we should be like the rivers, always flowing. So very much, very much thankful for you, Vijayji, for every time that you come here and pour us your wisdom. So thank you for that, Vijayji. Thank you very much, Madhuji. As you have said that we should not program ourselves or anybody. The entire life, the entire existence on this earth, we always condition them according to the thoughts passing by in our mind, or according to the thoughts we have accepted from our previous generation or from our surroundings. So whenever we actually condition or precondition ourselves, we confine ourselves. iPhone SK has raised the hand. Please unmute yourself and please do share your नमस्ते namaste. जी। लास्ट टाइम भी आपने मुझे जो हिंदी में इतना सब सही से क्लियर करके समझाया था, जब मैंने देखा कि ओजा सर दे रहे क्लास, तो मैंने सोचा वो मुझे हिंदी में समझाएंगे, इसलिए मैं बैठ गई थी। और लास्ट टाइम का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अपने थॉट्स के बारे में। और आज भी मुझे इंग्लिश में इतना ज्यादा समझ में नहीं आया, कि जो समझ में आया वो मैं क्लियर करके बता नहीं सकती, लेकिन आप थोड़ा मुझे समझाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी, थैंक यू। जो बात पिछली बार मैंने बोली थी, वही बात आज ही थी, कि एक ही बात होती है कि अपने आप को साक्षी के रूप में देखिए। जस्ट बी अ विटनेस। अ विटनेस डज नॉट पार्टिसिपेट। साक्षी जो होता है वो साझी नहीं बनता, वो साझेदारी नहीं करता। जो कुछ भी हो रहा है उसको केवल वो देखता ही है। तो वही बात आज ही थी कि जब हम बच्चे थे तो एक गेम खेलते थे। रास्ते पर जो कार जाती थी, तो जो वो कार का कलर सबसे पहले बता देता था कि ये लाल कार है या तो ये ब्लू कार है, तो वो कार उनकी हो जाती थी। लेकिन हम जानते हैं कि वो कार कभी भी हमारी थी ही नहीं। इसी तरह से हमारे दिमाग में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, जिसे हम अच्छे विचार कहते हैं, बुरे विचार कहते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा बुरा विचार मेरे दिमाग में क्यों आया, तो हम नाखुश हो जाते हैं। या तो अच्छा विचार आता है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन खुशी और नाखुशी दोनों उसी जगह है। उसके साथ हमारी पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, और केवल देख देखते ही रहना चाहिए कि ये विचार मेरे दिमाग में आया और चला गया। ठीक उसी तरह से ये अस्तित्व जो है, वो अस्तित्व में भी हमें केवल बहना ही चाहिए। जो कुछ भी हो रहा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई माने या न माने वो अलग बात है। हम सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक छोटा सा सेल जो होता है हमारे शरीर में, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे आंत में जो 3 ट्रिलियन 3,000 अरब
बैक्टीरिया बैठे हैं, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम जानते ही नहीं कितने बैठे हैं जो हमारा खाना पचाते हैं। अस्तित्व में हम कुछ भी जानते नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है, सेंसेस है, वो लिमिटेड है। यहाँ केवल एक ही खेल है, एक ही गेम है कि केवल और केवल साक्षी भाव से रहना, केवल और केवल ऑब्जर्व करना। वही एक गेम है, और वही गेम हमने ही बनाई है, लेकिन हमें मालूम नहीं। और ये सब कुछ हम ही है और हमने ही किया है। वही जानने के लिए हमें ध्यान में जाना चाहिए। और जब हम ध्यान में जाते हैं तो कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन ध्यान का मतलब एक ही है, साइलेंस, शून्य अवस्था। वो अपने आप, जब आप अपने सांस को ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप जो विचार है वो शून्य हो जाएंगे। थॉट्स will cease to exist when we actually observe our breaths, or when we concentrate or focus our mind on a singular point. तो एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा मन अमन हो जाता है। जो माइंड बहुत चलता है वो आम इंसान है। जिसका माइंड बहुत स्लो चलता है, हमारे दिमाग में 100 विचार आ गए, लेकिन आप 2 ही विचार को आप अप्रूव करते हो, या 2 ही विचार की बात सोचते हो। जिसका मन स्लो है वो संत है, लेकिन जिसका मन संपूर्णतः अमन हो गया है, चलता ही नहीं, थम गया है, वही एब्सोल्यूट है, वही ईश्वर है, वही होमोजीनस एक रस चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है। तो जब हम साक्षी भाव में जाते हैं तो केवल हमें देखना ही, ऑब्जर्व ही करना है कि ये आया, ये गया, हमारा कुछ नहीं। उसको हम लेबल भी नहीं करते कि अच्छा या बुरा। तो उससे क्या होगा कि हम किसी उर्मियों के बहाव में नहीं आए। इमोशंस के साथ वी विल नॉट फ्लो। जॉय, पेन और प्लेजर, दे ओनली come as a result of our flowing with the emotions. हम जब अपनी उर्मियों के साथ बहते हैं तभी आनंद या तो दुख हमें मिलता है। तभी हम आइदर शॉक करते हैं या तो हम एंजॉय करते हैं। तो किसी के साथ नहीं बहना, इसका नाम ही साक्षी भाव है। और साक्षी भाव में से ही हम शून्य अवस्था में जा सकते हैं। तो वहां से जो परम तत्व है उसकी अनुभूति कर सकते हैं। सो इसी तरह का आज का वही थीम था जो पहले बताया गया। एग्जैक्टली नहीं था, लेकिन वो बात तो हो रही थी कि साक्षी भाव में रहना है। थैंक यू। तो इसमें ब्रिज और वॉल का क्या कॉन्सेप्ट था जो भी पढ़े? यदि हम किसी एक सिद्धांत पर वहां थम जाते हैं, जैसे कि मैं हिंदू हूँ या तो मुस्लिम हूँ या तो क्रिश्चियन हूँ, या तो मैं ब्राह्मीण हूँ या तो मैं अमेरिकन हूँ इत्यादि, या तो मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ या तो अनपढ़ हूँ। कोई एक प्रिंसिपल पर जब हम, कोई एक विचार पर जब हम थम जाते हैं, वही विचार को हम पकड़ लेते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने एक दीवार बना दी। वो दीवार के बीच में ही हम जिंदगी जिएंगे, क्योंकि
दीवार के पार जो कुछ भी है वो हमें दिखाई नहीं देगा। या तो फिर हम दीवार को कूद कर वो दीवार की उस पार जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को एक दीवार में ही बांध लिया है। जब हम एक दीवार में बंद हो जाते हैं तो हम अपना जो अस्तित्व है उसको भी हम बहुत संक्षिप्त और लिमिटेड कर देते हैं, मर्यादित कर देते हैं, और इसकी वजह से ये अस्तित्व का जो पूरा अनुभव है वो हम नहीं ले सकते। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कृष्ण की बात सोचिए। मैं कृष्ण की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक ऐसा कैरेक्टर हुआ, अस्तित्व का एक ऐसी अभिव्यक्ति हुई इस दुनिया में कि वो बांसुरी भी बजा सकते थे और सुदर्शन भी हाथ में ले सकते थे। अब बांसुरी बजाना वो प्रेम की बात है, सुदर्शन लेना वो युद्ध की बात है। हम कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ते कृष्ण ने कभी भी अपनी जिंदगी को रिग्रेट किया हो कि मैंने गलत किया या अच्छा नहीं किया या सही किया है, बहुत अच्छा किया है, ऐसे कुछ भी बात हम नहीं पढ़ते उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने अपना अस्तित्व लिमिटेड नहीं रखा था। जो सामने आया, जिस वक्त जो भी सामने से गुजर रहा, जो भी हो रहा है, उसी तरह से उसी वक्त उन्होंने अपना कार्य किया। तो यदि हम कोई दीवार बांध लेते हैं कि नहीं मैं तो बांसुरी ही बजाऊंगा, तो फिर सुदर्शन का अनुभव नहीं होगा। या तो मैं केवल चक्र ही घुमाऊंगा, तो बांसुरी क्या चीज होती है उसकी अनुभूति भी हमें नहीं। तो जब हम दीवार बांध लेते हैं कि मैं मुस्लिम हूं या तो ईसाई हूं या तो हिंदू हूं, तो जो अस्तित्व की जो विशालता है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट तो हमने ही बनाए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्धिस्ट इंडियन फॉरेनर स्त्री पुरुष, वो सभी कॉन्सेप्ट मनुष्य ने ही बनाए। कोई एक ने बात सोची, दूसरे ने उस बात का स्वीकार किया, तीसरे ने किया, और इस तरह से सोसाइटी ने वो स्वीकार किया। तो आधा समाज ने स्वीकार नहीं किया, बाकी ने स्वीकार किया। तो जिन लोगों ने स्वीकार किया वो भी बंध गए दीवारों में, और जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया वो भी बंध गए दूसरी दीवारों में। तो ये सभी कॉन्सेप्ट मैन मेड है, मनुष्य की पैदाइश है, हमारे दिमाग में से जो उत्पन्न हुआ है वही ये सभी प्रिंसिपल्स है। चाहे वो धर्म के प्रिंसिपल हो, संप्रदाय के प्रिंसिपल्स हो, किसी भी प्रिंसिपल्स की आप बात, जब डोगमा हम क्रिएट करते हैं, एक सिद्धांत बनाते हैं कि परमात्मा मान लीजिए कि निराकार है, या तो उसका एक आकार है वो साकार है, या तो परमात्मा देवी स्वरूप है या तो देव स्वरूप है, या तो परमात्मा वेजिटेरियन है या तो नॉन वेजिटेरियन है। अब कोई भी सिद्धांत जब बनाते हो तो वो सिद्धांत तो हमने ही बनाए ना, तो हम ही अपनी दीवार खड़ी करते हैं, वो उसी दीवार में हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। वो दीवार के अन्यथा कोई बात आ गई तो हमें वो अच्छी नहीं लगती, और फिर हमें ऐसा लगता है कि मैंने पाप कर दिया। दीवार के अंदर जो बात चलती है उसके अनुरूप कोई बात आ गई तो हमें ऐसा लगता है कि हमने पुण्य कर दिया। लेकिन पाप और पुण्य वो हमारा क्रिएशन है, दीवारें हमारी क्रिएशन। लेकिन जो सूफी होते हैं, जो परमहंस होते हैं, जो मिस्टिक्स होते हैं, जिन्होंने साक्षात्कार किया है, वो दीवारों में नहीं रहते, वो ब्रिज बनाते हैं, सेतु बनाते हैं, इधर से उधर उधर से उधर। और इसीलिए क्योंकि उन्होंने सेतु बनाया, सब कुछ वो क्रॉस कर जाते हैं, तो उनका विस्तार हो गया, हर तरह का अस्तित्व का वो अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए
सेतु बनाना, ब्रिज बनाना, वो दीवारों के बीच में रहने से कुछ ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सेतु बनाने से, ब्रिज बनाने से हम अस्तित्व का अनुभव पूरी तरह से कर सकते हैं। हम कहीं भी एक ही मान्यता में संकुचित नहीं रह जाते, और एक विशालता, एक वास्टनेस हमारे सामने आती है। हम किसी भी डोगमा में, प्रिंसिपल में, सिद्धांत में, एक रिवाज में बंधे नहीं रहते, क्योंकि अस्तित्व तो हर जगह है। ये दीवारें हमने खड़ी की है, मनुष्य ने दीवारें बनाई है अपने अपने हिसाब से। वो वास्तविक नहीं है। अस्तित्व हर जगह, सर्वत्र है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा सर्वत्र व्यापक है। आत्मा को आप बांध नहीं सकते एक दीवार में, या तो एक घड़े में, या तो एक लोटे में। वो हर जगह है, चैतन्य हर जगह है। तो जो दीवार तोड़ता है, दीवार से बाहर निकलता है, जो ब्रिज बनाता है, जो सेतु पर चलता है, उसको अस्तित्व का पूरा अनुभव होता है। और वो करने के लिए एक ही भाव है, साक्षी। आप चलते रहिए, देखते रहिए, और जो कुछ भी आपके जीवन में सामने आए उसका अनुभव करते रहिए। न तो सुख, न तो दुख। यदि आपको दुख भी लगे तो दुख को भी देखते रहिए। यदि हमें सुख की अनुभूति होती है तो हमें सुख को भी देखना चाहिए। कहीं भी जगह पार्टिसिपेशन की जगह, साझेदारी की जगह, हमें केवल साक्षी भाव से जीना चाहिए। तो जब हम साक्षी भाव से जीते हैं तो दीवारें नहीं होती, वहाँ केवल ब्रिजेस और सेतु ही होते हैं। थैंक यू सो मच विजय सर, आज मुझे बहुत क्लियर हुआ। एक क्लास ली थी मैंने, 7 ज्ञान भारत में भी मैं हूँ, उस ग्रुप में किसी ने मुझे ऐड कर दिया था। तो उसमें भी यही था कि स्पिरिचुअल ब्रिज क्या है, तो उसका सही से आंसर नहीं आ रहा था मुझे भी समझ में। आज मुझे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई, और मैं अपना कुछ अनुभव आपको बताना चाह रही हूँ। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि काफी सारे हमारे अंदर डर बहुत होते हैं, जैसे आपने बताया कि हम मजहब की दीवारों में जहाँ पैदा होते हैं, घर की इसमें, और मजहब के अलावा जो हमने देखा है कि जैसे गुरु बना दिया, जैसे हमारे एक गुरु है, किस और कहीं जाओ तो बोलेंगे अपने गुरु के पास कुछ नहीं है क्या, तुम यहाँ क्यों आई हो। ठीक है, तो मैं अपना बता रही हूँ कि हमारा जो मंदिर है तो वहां पे कीर्तन ज्यादा होता है, समझ में कुछ नहीं आता। फिर मैं गीता ज्ञान जो होता है दादा भगवान का, मैंने कहा मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ मुझे अंदर को कोई प्यास है। तो मैं गई, वहां पे सत्संग सुना, तो कभी कोई टॉपिक, कभी कोई टॉपिक चल रहा था, बीच में मैं कुछ पूछ भी नहीं पाऊँ, इतनी रश। तो कोई भी बंदा अपना दिल की आवाज निकाल नहीं सकता। आप समझ सकते हैं कि आप 50-60 लोगों के बीच में माइक उठा के अपने दिल की आवाज नहीं सुना सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, हंसी मजाक उड़ती है, कोई भी डर हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं। वहां गई, जो मुझे समझ में आया वो चीज मैंने उठाई, और बाकी जो चीजें समझ में नहीं आई, मेरे अंदर ने कहा कि आपको वो चीजें देखनी नहीं है। हर चीज हर जगह पे नहीं होती है, हर उस्ताद को हर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं आती है, या मेरी समझ में हर एक टीचर नहीं आएगा। जैसे एक ही टीचर होता है स्कूल में, मैथ्स दो बच्चों को समझ में आती है, वही टीचर दो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, उसकी बातें समझ में नहीं आती। शायद मेरे अंदर यही है। चलो ठीक है, जो चीज मुझे अच्छी लगी मैंने वहां से उठाने की कोशिश की, उस पे चलने की कोशिश की मैंने। ठीक है, गलती है। फिर जूम पे मुझे पता चला कि बीकेएस का जूम पे आ रहा है, मुझे आने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, घर का माहौल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। हम इजी होना चाहते हैं
कि बाहर जाओ तो 2-2 घंटे लग जाते हैं घर आने जाने में, वहां पे 1 घंटा सत्संग सुनो, इससे अच्छा घर में जूम पे सुन लो। तो बाकी चीजें वहां सुनी। बैठे बैठे जब मुझे लिंक कहा क्या मेडिटेशन के लिए, बुद्धास का, मुझे मेडिटेशन ही करना था, मुझे टाइम भी था। जब मैं इमेजिनेशन में करती थी मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली होता क्या है मेडिटेशन, कौन कौन से मेडिटेशन है, कुछ भी पता नहीं था। मैंने जब ये किया था बीकेस में इमेजिनेशन पे, तो लगता था यही होगा, करना है तो करके देखते जाओ, और करती गई। जब मैंने ये किया अंदर मुझे सुकून मिला। तो अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर को जरूरत क्या है, लगता है कभी कभी मैं पुकारती हूँ भगवान मुझे बस अंदर का आनंद चाहिए, वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। तो अब जाके लगता है कि अंदर का आनंद अपने ख्यालों को तोड़ना मोड़ना मरोड़ना नहीं है। थोड़े दिन पहले मुझे पता नहीं क्यों कोई दर्द जैसे हस्बैंड के घरों में होते रहते हैं, ऐसा दिल कर रहा था मैं सुसाइड कर लूं, वैसा कर लूं। फिर भी फिर अंदर अंदर ख्याल रहते मेरे ख्याल है ये, चलो इनको देखती रहो, इनको देखती रहो। जब मैं मेडिटेशन में दिल कर रहा था नहीं कर रहा था, बस मैं बैठ रही थी, बस मैं बैठ रही थी। कुछ अपने आप को जज नहीं करना, जो ख्याल आते रहे जाते रहे, आने जाने दे दिया। उसके बाद खुद मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी। मैंने कहा देखो, जब मैं इन चीजों से घबराती थी कि हमें सिर्फ अपने मंदिर में ही जाना है और किसी संत के पास जाएंगे तो ये चीजें होंगी, उस डर को मैंने स्लोली स्लोली छोड़ा कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे जाना तो पड़ेगा उन चीजों पे। फिर देखो कुदरत ने मुझे क्या क्या दे दिया है, बस मैं यूनिवर्स को प्रे करती रहती हूँ कि मुझे अंदर का सुकून मिले, कैसे मुझे उस राह पे चलाओ। लेकिन एक सुकून सिर्फ नहीं है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने सिर्फ बांसुरी का मजा लिया होता तो सुदर्शन चक्र नहीं उठाते। जो हो रहा है वो हो रहा है, सिर्फ साक्षी बनते। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप बहुत क्लियर करके समझाते, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आपकी हिंदी की वजह से मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि चलो मुझे समझ में तो आ रहा है। थैंक यू। Thank you very much. You're welcome. Thank you once again, Vijay ji. Thanks. Thank you, everyone. So we'll all see each other again next week. Till then, have a great day. Namaste.